The problem with medical science and with many doctors and many pharmacists is greed and ignorance. जो मेडिकल जगत के जो लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि बहुत लालची होते हैं। वो लालच उनको इतना ज़्यादा होता है कि उन्हें केवल पैसा दिखता है, मरीज़ नहीं दिखता, और उस अपने लालच की वजह से वो मरीज़ को गलत रास्ते पर डालते हैं। अविद्या yes? इग्नोरेंस उनका ये जो योगा के बारे में उनका इग्नोरेंस है। वो सोचते हैं योगा से कुछ नहीं होता, जो भी होता है दवाइयों से होता है, और ऐसा वो खास तौर पर अपने लालच की वजह से करते हैं। You know, in these days when we go to the hospital or to the clinic, the first thing is the cashier, reception and cashier, right? यस कैशियर और मेडिकल में भी बैठे होते हैं, सबसे पहले आपका पैसा लेते हैं, उसके बाद में आपको अंदर भेजते हैं। Instead of the doctor, we meet the finance person, manager, cashier, secretary. Yes. No, doctor is there. Here is the cashier. पहले वो आपको जेब ढीली करते हैं, पहले उन्हें केवल वो मतलब उनका पर्पज ही आर्थिक होता है। आपका इलाज तो बाद में करते हैं, पहले उनकी सारी दृष्टि आपके पैसे पर टिकी हुई होती है, और जो आप पैसा नहीं देंगे तो अंदर भी नहीं जाएंगे। तो डॉक्टर तो अंदर होता है, पैसे पहले वो आपसे पैसे चार्ज करते हैं। I have been working in many countries, 25 countries for the World Health Organization, and I have seen many different types of medical practices. इन्होंने 25 देशों में मेडिकल से संबंधित मेडिकल हॉस्पिटल्स में या मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो इन्होंने बनाया हुआ उसमें उससे संबंधित 25 देशों में इन्होंने काम किया है, और सभी में अलग अलग देखा है, लेकिन सबके मूल में पैसा ही होता है। But what I have seen during these almost 50 years that I have been accompanying this, what I have seen is that more and more all over in every country, not only India, in every country, the health services, medical services are directed by not Bhagavan but by Pesa. ये कहते हैं मेरा पूरा पिछले 50 वर्ष का अनुभव है, चाहे वो कोई सा भी देश हो, सभी देशों में जो मेडिकल प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा बेईमानी का काम करती है। वो केवल पैसे चार्ज करती है, वो भगवान से भी नहीं डरते, केवल वो पैसे और पैसे पर ही काम करते हैं। बाकी मरीज का इलाज कम होता है और पैसे का चार्जिंग ज़्यादा होता है। So you know, very many patients come to the hospital or come to the clinic for one visit or two visits, and then they disappear. They do not come back. Yes. बहुत से मरीज आते हैं और आने के बाद में इलाज कराते हैं, लेकिन वो निराश ही लौट जाते हैं, इसके बाद नहीं आते, क्योंकि उनका भला नहीं होता, उनका इलाज होता ही नहीं है वहाँ पर। Many doctors and politicians explain this. They have been cured, so they don't come back because they are cured. बहुत से पॉलिटिशियंस डॉक्टर्स झूठ बोलते हैं कि उनका इलाज हो गया है, उनका रोग ठीक हो गया, इसलिए वो फिर से नहीं आते, लेकिन ये हकीकत नहीं है। वो निराश होकर के अपने घर बैठ जाते हैं और मर्ज उनका ज्यों का त्यों ही बना रहता है। I don't think so. What do you think? The same way you are ये बिल्कुल ठीक बात है। US, you know it. Yes, the reason is they are not satisfied. That's why they don't come back. Yes. Or the price is too high. In my country, the price for medical care is low, so that is not a reason. But in many countries, including the US, the patient cannot pay for many visits, so they cannot come back. But the doctor wants to think, fine, that patient is healthy. इलाज बहुत महंगा है, और वो महंगे इलाज की वजह से उनके पास इतना पैसा भी नहीं होता, इसलिए डॉक्टर मरीज अपने घर बैठ जाते हैं। डॉक्टर सोचते हैं कि वो ठीक हो गए, लेकिन हकीकत इसके विपरीत होती है, और वो लुट के और अपना मरीजों का तो मर्ज भी रह जाता है, पैसा भी चला जाता है, और वो निराश होकर अपने घर बैठ जाता है। Unfortunately, it happens that they get healthy, yes, but very often they don't get well
they don't get well, they are not satisfied, they cannot afford it, or in the worst case, what is the worst case? They don't come back because they have died. सबसे बुरी बात यही होती है कि वो निराश होकर फिर आते ही नहीं है, चाहे कोई समझे कि डॉक्टर समझते हैं वो ठीक हो गए, लेकिन वो कभी ठीक नहीं होते हैं और जी मर जाते हैं. I think as a medical person, and I have followed the pandemic, COVID pandemic, I think that more patients have died from the medicines and the vaccines than have died from the coronavirus. I think more people have died from the treatment than from the disease. कोरोना एपिडेमिक से जो लोग मरे हैं उनमें दवाइयों से ज़्यादा मरे हैं, बिना दवाइयों के नहीं उतने मरे हैं. जो दवा मिली हैं, इंजेक्शंस मिले हैं, जब उनको ट्रीटमेंट मिला उससे ज़्यादा लोग मर गए हैं, और जिन्होंने ट्रीटमेंट नहीं कराया वो बच गए. So that is why I am so impressed by the treatments here, because I know that Guruji has treated COVID patients and they are cured. और यहाँ तो गुरुजी ने बिना ही दवाइयों के सारे कोविड पेशेंट को ठीक किया है. जितने भी लोग आए हैं यहाँ सब ठीक होकर गए हैं, कोई एक भी पेशेंट नहीं मरा है, और इसका इनके दिलो दिमाग पर बड़ा अच्छा असर हुआ है. इससे बड़े इम्प्रेस हैं कि यहाँ जितने भी मरीज आए सब ठीक होकर गए और बिना दवाइयों के ठीक. So I come back precisely because I am satisfied. That is why I came back. If I had not come back, perhaps somebody would think that I have died, or because the old man has died, bye, or that he is not satisfied. But it is not the case. I wanted to come back. I saved money for the air ticket, and I came back. And I'm very happy to be here again. I'm very happy to see some of these people. I recognize some of the people I recognize, and you're very fine people, and I am impressed by you also, because you are so very good to each other. I think that you're so very nice. You're very good to me. And I see a lot of service, seva, beautiful service. Sundar seva hai. ये कह रहे हैं कि मैं इसलिए यहाँ पर दोबारा आया हूँ जिससे कि मैं ये बता सकूँ कि मैं यहाँ से कितना संतुष्ट होकर गया था और मुझे यहाँ कितना अच्छा लगा था, यहाँ के वातावरण से मैं कितना प्रभावित था. इसलिए मेरे आने का दोबारा का यही पर्पज़ रहा है कि मैं आप लोगों से फिर से मिल सकूँ और अपनी खुशी व्यक्त कर सकूँ कि मुझे यहाँ पहले भी आकर खुशी हुई थी और आज मैं आपसे रूबरू. I have no problems. I have been asked several times by people here, why did I come here in the first place? What was my problem? I had no real problem. I am quite healthy. I have small problems. For 75 years, one has problems. It's normal. That's normal. It was Dr. Kusum Josiah who brought me here. Some of you know her. The lady said, I must come. I met her at another ashram and she recommended it. And I said, okay, I'll try. So I had no problem, but I was impressed. And I felt healthy, yes. I felt very healthy, and I feel very good here. I feel that even if I am not ill, I feel stronger and happier when I am here. So that is a very good medicine. डॉक्टर कुसुम मुझे लेकर यहाँ पर आई थी, और वैसे तो मुझे कोई वैसे ज़्यादा कुछ बीमारी नहीं थी, छोटी मोटी बीमारी थी, और फिर मैं यहाँ आकर और ज़्यादा हेल्दी महसूस किया, मैंने ज़्यादा अच्छा महसूस किया, और इसलिए मैं अपना अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ. ये कहते हैं कि मैं रख रहा हूँ कि 75 साल की उम्र में भी मैं स्वस्थ हूँ, कोई मुझे बीमारी नहीं. There are good doctors. I think there are honest doctors. Some of them are just ignorant, some of them are knowledgeable, and they want to do a good job. There are good doctors, good ordinary conventional doctors, and those honest doctors, they listen, and they are prepared to listen and to try also naturopathy or health cure. They are open. The doctors who are greedy and very egoistical and ignorant, they don't want to hear about it. Some of my colleagues, they just laugh at me in Sweden. They laugh. They think I am silly. Okay, they can think that, doesn't matter. Not all the alternative doctors
Ayurvedic doctors or naturopathy doctors are honest and sincere and really, really good. I don't think so. There are greedy and ignorant naturopaths, Ayurvedic doctors also. And it's the same reason. Also in Ayurveda, I have been to Ayurvedic hospitals in India. I have met very highly respected Ayurvedic doctors, and I have seen there is also money coming in, greed coming in, enormous hospitals like palaces. So that's one of the reasons I like this ashram. It is not a palace. It is a real ashram. This for me is a real, genuine, authentic ashram, because it is not a palace. It is not meant to impress. कुछ बहुत थोड़े डॉक्टर्स ऐसे हैं जो नेचुरोपैथी का सम्मान करते हैं और अपने पेशे के प्रति बड़े ईमानदार भी होते हैं, उनका स्वागत है। लेकिन अधिकतर ऐसे डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा है जो नेचुरोपैथी को बेकार की बताते हैं और केवल अपनी लालच में और अपनी अज्ञानता में वो उनको दूसरी पैथी पे मतलब नेचुरोपैथी पे विश्वास नहीं है। वो केवल मरीज को भरमाते हैं और अपनी दवाइयों खिलाकर ही और पैसे लेकर ही वो ज़्यादा अपना भला से। This is the knowledge I want to take home and spread. What I have learned from Guruji, what I have read in the books that Dr. Kusum gave me and Guruji gave me. This is the knowledge I will spread in Sweden, so that this type of approach with diet and yoga and a healthy living can be part of our health services to help healthy people and suffering people. That is the reason, and I hope to take this back home with me to Sweden. Thank you very much. कहते हैं कि मैं अपने देश में जो मैंने यहाँ सीखा है गुरुजी से, जो कुछ डॉक्टर ने भी मुझे बताया है और जो मैंने यहाँ पर देखा है, अपनाया है, ये मैं अपने देश में भी इसका प्रचार प्रसार करूँगा, जिससे कि स्वीडन वालों को भी हम भारतवासियों की तरह ही लाभ हो सके। तालियों से स्वागत करें।